Hello everyone. Today we are going to study an adventurous poem which is very amazing. The title is 9 Gold Medals. This poem composed by David Roth, who was born in 1954. The poem 9 Gold Medals by David Roth describes a sports event named Special Olympics. इस पोएम में डेविड रोथ हमें स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बता रहे हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक्स से एंटाइटल्ड है, बिकॉज इस पोएम में डेविड रोथ डिफरेंटली एबल्ड पीपल की वैरायटी एंड उनकी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं. The poem stressed the importance of sharing and caring in human lives rather than just winning and achieving. यहाँ पर डेविड रोथ ह्यूमन लाइफ की केयरिंग एंड शेयरिंग नेचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं rather than सिर्फ गेम को जीतना या अचीव करना. डेविड रोथ celebrates human values such as kindness, cooperation and empathy in the poem. इस पोएम में डेविड रोथ ह्यूमन वैल्यूज लाइक काइंडनेस पर, कॉपरेशन पर और एम्पैथी पर टाइटल्ड एंड फोकस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. There are 8 stanzas in this poem. So the very first stanza is, the athlete had come from so many countries to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. Poet says, several athletes came from all over the country to win gold, silver and bronze medals. According to the David Roth, तरह तरह के एथलीट्स अलग अलग कंट्रीज से, ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज से आते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल्स के लिए. व्हेनेवर ओलंपिक गेम्स हेल्ड, दे हैड स्पेंट वीक एंड मंथ्स इन strenuous training for the games, and those sports persons used to spend वीक्स एंड मंथ्स फॉर ट्रेनिंग. जितने भी स्पोर्ट पर्सन्स हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनी वीक्स और मंथ्स को स्पेंड करते हैं ट्रेनिंग टाइम के लिए, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. इन सेकेंड स्टैंजा, ऑल राउंड द फील्ड spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. In this, poet wants to say, the spectators had gathered around the field to cheer the young participants. Spectators means viewers, visitors who used to sit in the audience as the audience. So the poet says, spectators means visitors had gathered around the field to cheer the young participants. और वहीं बहुत सारे viewers इकट्ठे होकर young participants को cheer करते हैं. The final event of the day was about to begin. And here David Roth is going to express and explain about a final event. As I earlier told you, this poem is related to the special event. So poet is saying कि अब final event of the day शुरू होने वाला था. So what was the final event? The loudspeakers called out the names of the runners, the 100 meters, the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. Poised means ready,
Determines means resolved, means with the firm determination. So in this stanza, poet says, The 100 meters race was going to begin. 100 मीटर की रेस शुरू होने वाली है. And 9 determined athletes took their position. और 9 determined athletes अपनी अपनी पोजीशन को ले चुके हैं. And ready for the signal for the race. और वो सब सिग्नल, एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं. They were ready for the signal for the race. Now, what happened? We will continue in the 4th stanza. The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners on hearing the sound. But the youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. Here the poet says, the contestants began to run as soon as starting the pistol. जैसे ही पिस्टल फायर होती है तभी contestants स्टार्ट करते हैं दौड़ना. One of them, in fact, the smallest stumbled and lost balance. उन्हीं में से कोई एक, सबसे छोटा, अपना बैलेंस खो देता है. And he fell on the track, और running track पर गिर जाता है. Then what happened? He gave out a cry of frustration and anguish. Frustration और anguish. Anguish means गुस्सा and frustration means disappointment. तभी वो participant अपने frustration और anguish को निकालने के लिए रोने लगता है. His dreams and his efforts dashed in the dirt. उसके सपने, उसकी कोशिशें सब मिट्टी में मिल रहे हैं. But as sure as I'm standing here telling the story, here the poet is saying that as sure, मैं वहाँ पर sure था, and I'm standing here, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको story बता रहा हूँ. Now it's a strange one, but here is what occurred. और अचानक वहाँ पे क्या होता है? That the poet is going to tell in next stanza. He says, the 8 other athletes stopped in their track. The one who had trained for so long to compete, one by one they turned round and come back to help him and lifted the lad to his feet. Here the poet is saying the remaining 8 runners on seeing him fall. जैसे ही बाकी के 8 runners ने उस पर्सन को गिरते हुए देखा, अपने कॉन्टेस्टेंट को गिरते हुए देखा, इंस्टीड ऑफ कंटिन्यूइंग द रेस, दौड़ते रहने की जगह दे स्टॉप्ड, वो सब रुक गए, एंड टर्न बैक टू हिम, और मुड़कर उसकी हेल्प की. ऑल द एथलीट्स had trained for so long to compete and win, but each of them stopped to help bring the young boy to his feet. एक एक एथलीट, एक एक कॉन्टेस्टेंट रुका और रुककर उस यंग बॉय को उठाया और उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए हेल्प की. So by this poem, the poet is saying and telling us the human values, kindness and cooperation. Now the 7th stanza is, then all the 9 runners joined hands and continued. The 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer to the mark. That was the special event. Why? Because after that all the 9 athletes joined hands. जितने भी 9 एथलीट्स थे उन सब ने एक दूसरे से हाथ पकड़ लिए एंड वॉक टू फिनिशिंग लाइन टुगेदर, और उस रेस को एक साथ फिनिश किया. द रेस दैट वाज मीन्ड फॉर रनिंग वाज देन रिड्यूस्ड टू अ वॉक, और जो रेस दौड़ने की थी वो एक वॉक में कन्वर्ट हो गई. द बैनर अबव रीड स्पेशल ओलंपिक्स वाज एप्रोप्रिएट, और बैनर पे लिखा हुआ स्पेशल ओलंपिक exact and appropriate title था, just as the contestants' behavior added to the uniqueness of the event,
and the behavior of the contestants added a uniqueness in that event. So the last stanza of this poem conclude, that's how the race ended with 9 gold medals. They came to finish line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will, said more than these words ever will. So the race ended with not one, and इस तरह से ये रेस एक पर्सन, एक कॉन्टेस्टेंट के थ्रू फिनिश नहीं हुई, बट 9 विनर्स, बट देयर वर द 9 gold medalists, 9 winners. Each of them was given a gold medal. हर एक ओलंपियन, हर एक कॉन्टेस्टेंट को एक एक गोल्ड मेडल दिया गया. For they walked hand in hand to the finishing line. The exemplary behavior of the athlete made the Special Olympic really special one. और इस तरह से इस exemplary behavior ने स्पेशल ओलंपिक को और ज़्यादा स्पेशल बनाया. सो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट एंड beautiful poem, 9 gold medals. I hope all of you have easily understood the poem and the message which David Roth wanted to give us. Thank you so much.